Hello, hello, hello. Good afternoon, everyone, and welcome to the Hindu editorial analysis of the 9th of May. Can you see and hear me? Mm, all right. Hi, Chandan. Hi, Alpesh. Hello, Hivan. Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. And welcome to today's Hindu editorial analysis brought to you by Unacademy and presented to you by Vaishnavi. Okay, let's get started, shall we? Somali, hi, hello. Hello, Somali. I have another Vaishnavi. Hello, hello, and welcome. um, Anushka, hi, good afternoon. Okay, comments like these make me also question. All right. Hi, Vaishnavi. I'm doing great, exceptionally well. Thank you, everyone, for such a warm welcome. All right, so let's get started with today's Hindu editorial. But before that, the zooming in, zooming out natak hoga thoda sa. So just bear with me till then, okay? Oh, oh, not just bear. That's good. Other than that, also you. Hmm. Hmm. All right. So let's start with our morning. ऑलराइट दिस इज माय टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे टेलीग्राम चैनल को प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ अनअकैडमी अंडरस्कोर वैष्णवी अंडरस्कोर क्लैट है अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड इट विल टेक यू स्ट्रेट टू माय चैनल जहां पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे अबाउट माय क्लासेस एंड यू गेट some quiz and exercise fun games that we have on the telegram channel, and you can talk to me directly on my telegram channel. All right, so these are the words. Let's get started with the words. We have 15 words today, and the first word is vigilance. And this editorial has been selected by Alpesh, okay, because he was the winner of the special session. Okay, Hanaya, Nishita, hello, hello. Nishita does not seem to be in a good mood. She's just replying with lesser words than she usually replies. Ma'am, today I started reading Harry Potter book. Yay, very nice, and you will love it. I'm sure, Vaishnavi, you will love it. Good job. बाय द वे इफ यू हैव बाय दिस टाइम आप अभी तक जब से हमने मार्च में प्रेपरेशन शुरू किया था और अब तक हमारा एटलीस्ट आप 3 बुक्स यू मस्ट हैव कंप्लीटेड अगर 3 बुक्स आपने अभी तक नहीं कंप्लीट की है गेट रीडिंग दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली नॉट रीडिंग as much as you should. Okay, so 3 books, 3 novels that you are supposed to finish, make sure that you finish it. Apart from that, editorials jo hum karte hain, analysis, this is also very important, and newspaper reading is also important. Remember, because CLAT English mein hota hai, right? CLAT ka pura exam English mein hota hai. So all the questions are
इनडायरेक्टली इंग्लिश क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम द क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वहां पर मैं नहीं घुसाने की कोशिश करूंगी इंग्लिश, बट अदर सेक्शंस यू डू नीड इंग्लिश एंड good English, good vocabulary, good command over your language, and that's why this becomes so important. So make sure that every one of you are attending these classes regularly, reading 3 books at a time, not at a time, sorry, 3 books. You have read 3 books and you have started with the next book, okay? So, like Vaishnavi said, she has started with Harry Potter. Very nice. Ma'am, this is my first editorial with you. Ye Lakshmi, welcome, welcome, welcome. And I hope that it continues forever, our relationship. Okay, till you give CLAT. Not forever. Hi Manis. Nana, wish mujhe. Hmm. कोई नहीं निशिता, this was not the last quiz, and next quiz make sure you and Manas are not playing together, okay, with the same account. So next quiz में, next special session में जो हमारा editorial quiz होगा, definitely I'm sure निशिता you will win because you played fabulously. सारे के सारे questions आपने सही किए थे, but unfortunately, you know, rules are rules, and sometimes even when you are doing really well, rules come in the way. All right, so let's get started. Can you recommend 3 books? Yes, Lakshmi, I can recommend. If you are a beginner, अगर आपने अभी books पढ़ना शुरू किया है, तो The Monk Who Sold His Ferrari, The Alchemist, and Tuesdays with Maury would be a very nice start. अगर आपको fantasy और adventure में interest है, so you can start with Harry Potter or Lord of the Rings for that matter. You can start with Lord of the Rings as well. Okay, so these are 5 books that I recommend. And अगर आपको mystery और thriller में interest है, तो The Silent Patient is a very nice start. I finished that book in a day, so I'm sure you will be able to finish it. Okay, so The Silent Patient and The Maidens is also of the same by the same author, so you can read either of the two. Both are nice, but The Silent Patient is killer. Okay, all right, so let's get started with the first word. Vigilance is the first word. That means the action or state of keeping careful watch for possible danger or difficulties. Okay, so basically, vigilant hona, vigilance is the noun, and vigilant hona matlab kya hota hai? It is the verb form. That means cautious hona, right? Keeping a careful watch, matlab आप निगरानी रख रहे हो ताकि कोई भी difficulties before you can anticipate any difficulty coming your way before it happens or before it arrives, before the danger comes. So that is vigilance. Okay, so careful vigilance is required. Careful vigilance is required by everyone uh, during the period of pandemic. Okay, was required by everyone during the period of pandemic. Okay, the next word that we have is caution. Caution का मतलब क्या होता है? Take precaution. Caution pre comes, pre का मतलब क्या होता है? Before. Okay, so take caution before, and caution is just take care. Okay, care taken to avoid danger or mistake. तो आप कोई भी danger or mistake को avoid करने की कोशिश करते हो, तो that is called caution. Okay, and the next word is conferred. Now make sure that all of you are making sentences, and all of you are making just one sentence, please, from one word. Okay, and if I'm correcting it, make sure that you give your best shot and you just make one sentence. I repeat, only one sentence, because I cannot keep reading all the sentences of one student that will, and neglect the ones that someone has made it for the first time, right? तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप सब statements बनाओ, but only make one statement with each word. Okay, with each word make one statement, and if you are combining everything, then one paragraph would do. Okay. Okay, so vigilance कर लिया हमने, caution कर लिया. Caution is also a noun. Okay, cautious act is adjective. Cautious, right? We should be cautious. Take caution is noun. We should take caution is noun. We should be cautious is adjective. Okay,
कन्फर्ड का मतलब क्या होता है? कन्फर करना मतलब ग्रांट करना होता है, कोई टाइटल या डिग्री या बेनिफिट या राइट। ये वर्ड हमने बहुत बार किया है, राइट। कन्फर्ड हमने बहुत बार किया है। इट इज टू ग्रांट टाइटल, डिग्री, बेनिफिट और राइट, कुछ भी चीज दे देना, ओके। या तो टाइटल दे देना, या तो डिग्री दे देना, या तो बेनिफिट्स दे देना, या तो राइट्स दे देना, और राइट, ऑल दीज आर कन्फर्ड, ओके। सो कन्फर्ड ईडी फॉर्म यूज किया है मैंने, इसका ed फॉर्म नहीं यूज होता है, ओके। दिस इज समथिंग दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब है और ed लगा हुआ है, तो मैंने पास्ट फॉर्म यूज किया, राइट। सो द प्रेजेंट फॉर्म और द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म वुड बी कन्फर, है ना, कन्फर होगा। और राइट, सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? एब्सोल्युटली सर्टेनिटी, विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, ओके। कोई भी चीज एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ किया जाता है, या कन्विक्शन दैट समथिंग इज द केस। आप पूरे दावे के साथ बोल रहे हो कि यही सही है, ओके, दिस इज द राइट स्टेप, दैट इज सर्टिट्यूड, ओके। सो यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट, यू आर डेफिनेटली आप पूरा का पूरा श्योर है इस बारे में। सो दैट इज योर सर्टिट्यूड, एंड अगेन इट इज अ नाउन, तो इट विल बी यूज्ड एज अ नाउन, है ना। नाउ ये वर्ड देख के लोगों को लगा होगा कि व्हाई इज राइडर ओवर हियर, राइट, दिस इज राइडर, राइट। सो राइडर इज एनीवन हु राइड्स, okay, rides a horse is a horse rider, rides a bike is a bike rider, okay. So rider is anyone who rides. Then why is it here? Because rider के दो meaning होते हैं. This is the second meaning of rider, okay. Careful boys and girls, this is the second meaning of rider. Rider का मतलब ऐसा कोई condition होता है जिसपे already a condition or proviso added to something already agreed. अब मैंने कुछ आपसे अग्री किया, ठीक है, कि हाँ हाँ हर दिन 12 बजे क्लास होगा आपका, ठीक है। मैंने ये अग्री किया कि हर दिन 12 बजे क्लास होगा आपका। नाउ एंड देन आई ऐड कि फिर आपका इस 12 बजे के क्लास के बाद एक 15 मिनट का एक और सेशन होगा, ओके। सो समथिंग दैट यू अग्रीड, आपने हाँ कर दिया कि ठीक है 12 बजे क्लास होगा, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें कि 15 मिनट का एक्स्ट्रा एडिशनल सेशन होगा, दैट इज द राइडर ओवर हियर, ठीक है, दैट इज द राइडर, दैट इज द कंडीशन, ठीक है। बेसिकली एक कंडीशन लगा दिया मैंने एक ऑलरेडी अग्रीड चीज पे, ठीक है, एक कंडीशन लगा दिया, दैट इज अ राइडर, ओके। So if I say something and then I add condition to it, it is called a rider. Okay. एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक भी आपने सुना होगा, पैंडेमिक इतना सुना है तो एपिडेमिक डेफिनेटली सुना होगा, राइट। सो पहले कोई चीज एपिडेमिक होता है, उसके बाद पैंडेमिक बनता है, राइट। सो एपिडेमिक इज अ वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज इन अ कम्युनिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक कम्युनिटी में स्प्रेड होता है, वाइड स्प्रेड अकरेंस बन जाता है कोई चीज, स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीजेस, ओके। तो एक कम्युनिटी में बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एन एपिडेमिक। तो जब तक पैंडेमिक, जब तक कोविड 19 was in China, it was an epidemic, okay? But when it started spreading to other countries, it became a pandemic, okay? ठीक है, तो this is also a noun. Wane is a word that means this is a verb, okay? Verb की तरह use करेंगे of a state or feeling, decrease in vigor or extend or become weaker, okay? So wane is basically अगर आप ज़्यादा पहले से आपकी potential drop हो रही है, okay? It is declining, okay? So that is called wane, okay? अगर आपका potential या आपका mood, okay? Mood भी अगर आपका decline हो रहा है, that is also wane, okay? So या आपकी एनर्जी डिक्लाइन हो रही है, दैट इज ऑल्सो वेन, ओके। सो वेन कैन बी यूज इन एनी डिक्लाइनिंग इमोशन, ओके। आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक इज अ नाउन जिसका मतलब होता है सडन अकरेंस ऑफ समथिंग अनवेलकम सच एज वॉर और डिजीज, ठीक है। तो आउटब्रेक में क्या होता है? सडन अकरेंस होता है, अचानक से कोई चीज अकर हो जाती है, राइट, ऑफ समथिंग अनवेलकम, ओके। जिसको आप नहीं चाहते हो कि ये आए, ओके, और वो आ जाता है, ओके। But not on a personal level. Don't use outbreak on a personal level, like aunties outbreak in our houses, okay. So there was an outbreak of aunties in our houses, okay. So it cannot be used on such small scale. Outbreak is generally on a large scale, okay. So a sudden occurrence of something unwelcome such as a war or disease, all right.
The last word of this page is fatigued. Okay, again ed form use किया है मैंने, इसका मतलब नहीं कि ed form ही use होता है. This is the past form that has been used in the editorial, right? So fatigue का मतलब क्या होता है? GUE. fatigue का मतलब क्या होता है? हम्म 1 second. ओके. इसका मतलब होता है वीकन. ओके, सो अगर आप पहले से कमजोर महसूस कर रहे हैं, ओके, और इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ कमजोरी, मेंटल कमजोरी या फिजिकल कमजोरी, ठीक है? तो तो दैट इज बाय, क्यों आपको ये कमजोरी महसूस हो रही है? क्योंकि आप रिपीटेडली आप ओवर स्ट्रेस हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा, आप बहुत टाइम से स्ट्रेस में हो, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस ले रहे हो, और उसके बाद फिर फाइनली क्या आता है? जब when you cannot take it anymore, तब आता है आपका fatigue. Okay, so fatigue is the verb form. All right, let's look at the sentences now. Okay, इस क्लास की पीडीएफ क्या जरूरत है वैष्णवी? इट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन यूट्यूब. आप जब चाहे जहां चाहे वहां पॉज करके आप देख सकते हो. एंड अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करोगे, व्हेन यू गो टू यूट्यूब यू सर्च अनअकैडमी क्लैट. अगर आप अनअकैडमी क्लैट सर्च करते हैं तो आपको एक पेज मिलेगा, राइट? सो यू सब्सक्राइब टू दैट. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसमें सब्सक्राइब करोगे. उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, राइट? वीडियोस के ऑप्शंस रहेंगे, शॉर्ट्स के ऑप्शंस रहेंगे. एक बहुत अच्छा शॉर्ट्स आने वाला है बाय द वे आज, एंड आई वांट एवरीवन, ऑल ऑफ यू हु आर हियर टू रिस्पॉन्ड टू द शॉर्ट्स. ओके, आई सी यू गाइज. आपको सबसे ज्यादा कमेंट करना चाहिए ताकि पता चलते रहे कि you are actually participating in the class, right? So video, shorts, live, ऐसे options आते हैं, right? So when you go to the live section आपको दिख जाएगा editorial analysis. पहले news nugget होंगे, फिर उसके बाद आपको दिख जाएगा editorial analysis, right? So you search that, आपको मेरे सारे editorial analysis मिल जाएंगे starting from the month of March. 2nd March से जो मैंने start किया है ये these episodes, you will be able to find it in the live section of Unacademy CLAT. Okay, so you don't need a PDF. All right. Manas, very good if you're thinking about reading Stephen King. Absolutely brilliant horror writer. बहुत अच्छा लिखता है, right? My mother seems to be in vigilance department. Hanaya, good job. Nice. Brigadiers are trained to dress up quickly because their job is majorly in vigilant condition. Their job is majorly focused on being vigilant. Okay, their job is majorly focused on being vigilant. Proceed with caution. Okay, yes, that is true. That is vigilance. And proceed with caution is for caution. Very nice. Alpesh, good job. Smart killa aapne. Whenever my relatives come and doing chugli of me, I do a vigilance of them. I am always vigilant when my relatives come and complain about me. Okay, I don't know, gossip about me. Okay, chugli, gossip about me. Okay, okay, Nishita. I reminded sorry, I remained in a state of constant vigilance, scanning my surrounding for any signs of danger. Very nice. Brilliant, Manas. Good job. Natu Natu song was conferred an Oscar recently. Brilliant sentence, Alpesh. Good job. I climbed the hills with caution. Very nice, Manas. Good job. Hanaya, my mother has done masters in vigilance, and this is why I have to be cautious all the time. Hanaya, what have you been doing that your mother has become this vigilant? Oh, okay, good sentence, Hanaya. Manas, the board of directors conferred with the CEO to discuss the company's financial performance. Very nice, Manas. Good job.
Everyone had a certitude of Kasab's case. Um, of preposition नहीं लगता है certitude के साथ, but let me see. Everyone had a certitude about Kasab's case. Okay, about Kasab's case. Always read books and try to increase your knowledge and try to be cautious. Okay, try to be Nishita. Try to be cautious and always remember. My God, so many advice, Nishita. Always remember that it's tack a single movement, and anytime wind can change its direction. Track a single movement. Okay. All right. So track a single movement. All right. ठीक है, Anishita Manas, once he had seen all the evidence, he felt a sense of certitude that he had made the right decision. Very nice, Manas. Perfectly all right. Aditya, principal conferred me 2 days leave. Principal conferred me 2 days leave. Very nice, Aditya. Good job. Hanaya, I am certitude enough. I have certitude enough. I have enough certitude that my mother can never allow me to go for a trek alone. But soon you will learn to fly, little bird. Hanaya. Okay, what? The police had conducted a vigilant inquiry on me. Vigilant inquiry on me. Okay, Hivan? You fabulous educator, and I'm certitude about this. I have certitude about this. I have certitude is something that you have. Thank you, Vaishnavi. All right. Vaishnavi ma'am added a rider that everyone needs to make only one sentence on each word to be more optimistic. Very nice, very nice, very nice, Alpesh. Good job. Good job. Uh, Aditya, see how well he understood the word right then and there, and he applied it to the sentence on a situation that is happening right now. Good. Forest officer kept a vigilant eye on wild elephants. Very nice, Aditya. In the final draft of the agreement, the lawyers added a rider that granted the company exclusive rights to use the technology. Manas, fabulous. Are you making these sentences? Because they are too good. Okay. Or ChatGPT. Hanaya, even if my brother breaks his bones, he would still manage to get Ryder to go for skating, so unlike me. Mm, all right. Okay. An epidemic leads a state into economic wane. Very nice, Alpesh. Good job. Hi, Sunil. Hello. Welcome. After the initial outbreak, the number of cases gradually began to wane, and it seemed like the epidemic might finally be coming to an end. Very nice, Manas. The zombie outbreak, yeah, finally outbreak. Say, I always remember this, right? So whenever outbreak comes into picture, या तो आता है दिमाग में cholera, right? Cholera outbreak, या तो आता है zombie outbreak. Very nice. The zombie outbreak led to all out chaos amongst people. Very nice, Alpesh. Good job. The outbreak of epidemic left many citizens fatigued severely. Very nice, Hanaya. Good job. Please confer. Okay, please confer your property papers. Nishita comes straight to the point. No beating around the bush. Company papers, property papers. After a long day at work, I was feeling so fatigued that I could barely keep my eyes open on the drive home. Very nice, Manas. Good job.
his bailout influence will wane. Very nice, Ewan. Good job. Uh, Health institutions get fatigued if they are kept on overshift. Very nice, Alpesh. With certitude, I'm saying that you are my favorite teacher. Nishita, you are also my favorite, one of my favorite students. um, I am rider that everyone should watch Vaishnavi ma'am's editorial class. Wow, Vaishnavi, आज आके आप क्या क्या publicity कर रहे हो मेरी? It looks like I am doing this for myself, but it's the other Vaishnavi. Okay, good job. I feel I'm in vain. Very nice, Hanaya. Good job. Simple and sweet. You have rider that if we want, you have added a rider or you have a rider that if we want to improve our English, then we need to read newspaper. Yes, Nishita. Yes, absolutely. The bike's vibration fatigued the metal and eventually broke the frame. Very nice, Sivan. Good job. Kathamrita is here. The vigilant nature of my mum is waning day by day because I'm getting obedient to her. Very nice, Kathamrita. Good job. So you have cracked it. Hanaya learned from Kathamrita. Nowadays, relationship is an epidemic issue. Nishita, okay. An epidemic though, ठीक है? An epidemic because epi, E से start हो रहा है, it has got a vowel sound, so an epidemic, okay? In early 1900s, panic was an plague, I think that's what you mean. Plague was an epidemic. Aditya? Yes. The comedy of forgiveness has no such luxurious certitude. Wah wah. The comedy of forgiveness has no such luxurious certitude. Good job, Kathamrita. Whenever I feel fatigued, I attend your class. Very nice, Nishita. You should do that. How nice. Okay. After eating much street food, Pihu is in vain. Okay. Pihu, stop eating so much of street food. Akarshan is here. Akarshan, can you see and hear me? Because I asked you in the special session, were you there? You were just participating in the quiz, but you did not respond to me. And what has happened to Ishant and Triranga? Both are not here today. Everyone loves a list, yes. But does the appeal wane when you know what's going to be on it? Yes. Good job, Akarshan. Very nice. Uh, my mistake seems to be in vain. Okay, in vain, not on vain. Good job, Alpesh. Um, just like a muscle machine suffers short-term fatigue. Very nice, Akarshan. Good job. As far as surface warship were concerned, the Germans were more than adequately prepared at the outbreak of war. Very nice. Good job, Hiwan. Beautiful statement. I'm currently working on writing my own novel. Woohoo! Manas, good job. Can you give me a few remarks if I send you the first chapter? It's fiction though. Manas, even I'm working. I think everybody is working on writing a novel. But you can send it across. I will just take a quick read if possible. If time permits, I will definitely take a look. Okay. But don't get offended if I don't take a look. Okay. I will try. All right. So moving on to the next set of words. Next set of words. Now this is sigh of relief. Okay. All right, sigh of relief. Sigh of relief is a feeling of comfort after worrying about something. So basically, राहत की सांस लेना is sigh of relief. It is an idiomatic expression जिसका मतलब होता है राहत की सांस लेना. Okay, as simple as that. Torpor. Okay, torpor is a noun which means a state of physical or mental inactivity. Lethargy, when you're just sitting and relaxing and not doing anything about anything, is torpor. Okay. So basically, torpor is a state of physical or mental inactivity. Okay. Or lethargy.
ठीक है, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, या तो आप फिजिकली एकदम ऐसे स्टेट में आ जाते हो जहां आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, या मेंटली आप ऐसे स्टेट में आ जाते हो कि ना हो पाएगा मेरे से अब कुछ। ओके, सो दैट इज टपोर। ओके, इज अ नाउन। कंप्लेसेंस भी हमने बहुत बार देखा है, एंड विथ योर क्लैट प्रिपरेशन यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट बट यू शुड नॉट बिकम कंप्लेसेंस, राइट? कंप्लेसेंट, सो कंप्लेसेंट नहीं बनना चाहिए आपको, कॉन्फिडेंट बनना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लेसेंस? इट इज अ नाउन विच मीन्स अ फीलिंग ऑफ काम सेटिस्फैक्शन विथ योर ओन एबिलिटीज, कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, I am the best. Okay, that is complacence. Own abilities or situation that prevent you from trying harder. So something that will push you to try harder, वो drive ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आप बहुत confident हो अपने आप पे कि मेरे से तो सब कुछ हो जाएगा। Okay, that is complacency. Okay, complacency, complacence, complacent. Okay, so these are the three forms in which we use the word. Recombinant. Recombinant is a word which means relating to or denoting an organism, cell, or genetic material formed by recombination. Okay, recombinant is basically something, कोई भी एक cell, biology में this is something that is used predominantly, जिसका मतलब होता है कोई भी organism या cell या genetic material में recombination से अगर कुछ फॉर्म हो रहा है तो ठीक है। सो एनीथिंग दैट इज फॉर्मिंग विथ recombination of the cells, recombination of the genetic material, so in that case the recombination is called recombinant. Okay, recombinant. सो वायरस के लिए हम इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज कोविड 19 का अगर आप देखोगे तो देर हैज बीन अ लॉट ऑफ वेरिएंट्स ऑफ कोविड वायरस, राइट? तो दैट्स व्हाई recombinant word is used over here. Next is eternal. Eternal is an adjective. I'm sure you know the meaning of eternal. And एक बहुत अच्छी movie भी आई थी Eternals. Not बहुत अच्छी movie. Lore अच्छा था उसका, but movie was not that great. But eternal is basically something that is lasting forever. Okay, हमेशा के लिए, without an end. कोई चीज हमेशा के लिए रह जाता है आपके साथ, या something that lives on forever. Perennial sort of thing, right? Is eternal. So eternal हो गया, and finally the last word for the day is adhere. Adhere is believe in and follow the practice of. कोई भी चीज में आप विश्वास करके उसको प्रैक्टिस करते हो, उसमें विश्वास रखते हो और उसको प्रैक्टिस करते हो, that is adhere. Okay, so believe in and follow the practice of. Okay, okay, अनुष्का कहाँ चली गई? All right, so the words that we have, till then you make words with sentences with the next page. Vigilance, caution, comfort, certitude, rider, epidemic, wane, outbreak, fatigue, sigh of relief, torpor, complacence, recombinant, eternal, and adhere. Okay, all right, so let's see how many of you made words, sentences from the second slide. Katha Amrita, I did not. I did not skip anybody. Nowadays, breaking up of relationships seems to be an epidemic for the society, and I am a recent victim of that. Oh, Kathamrita, I am sorry about your loss, but I'm sure you will. It is a tough period, but you will get over it. Don't worry. And it is an epidemic. Yes, Kathamrita, good job, good sentence. Um, Exams are over, and finally it's a sigh of relief for me. Very nice, Anaya. Good job. And sigh of relief for you. Uh, Alpesh. Farmers took a sigh of relief when the government gave them compensation for damaged crops. Very nice, Alpesh. Good job. After finishing my 12th boards, it's a sigh of relief, and it यहाँ पर कौन सा it use होगा? It apostrophe s. Okay, Vaishnavi, it apostrophe s. It's a sigh of relief. Okay, it's a sigh of relief for me. Good job.
Manas, when the lost kid came back home, the patient came back home. The parents sighed a relief, sighed with relief, sighed with relief. Wow, you change it into a verb, sort of idiomatic expression, which is nice. The parents sighed with relief, but that would not be the idiomatic expression. आपने सही यूज किया है, उन्होंने राहत की सांस ली, आपने ऐसे यूज किया, okay? But the idiomatic expression is sigh of relief, okay? Sigh with relief is a normal statement. Good job. Coma patients suffer from torpor. Very nice, Alpesh. Good job. I am so lazy that I'm always in torpor state. Very nice, Hanaya. Good job. I fell into a state of torpor and could barely keep my eyes open. Very nice, Manas. Good job. A person who is a torpor keeps blaming others for his failures. Good job, Anushka. Good job. And here you are. I am torpor in analyzing mocks. When it comes to mocks, when it comes to mock analysis, I'm a torpor. Okay. In democracy, the government should always be questioned, or it starts to be complacent. Very nice, Alpesh. Good job. His complacence about his grades led to his failure in the exam. Very nice, Manas. Good job. A lot of people fall prey to complacency. Very nice, Hanaya. Good job. You used complacency. Marvelous. Even when the police stopped chasing me, I felt a sigh of relief. I, yes, but Hivan, आप इतने दिन से मेरे स्टूडेंट हो, I please capital लिखो, please Hivan, I capital, okay? I has to be like your ego, always capital, है ना? I wish our editorial sessions were eternal. Yeah, I wish that too, Alpesh. um, we can do the whole newspaper every day till 12 o'clock and then again the next day. Okay. And just keep discussing newspapers. And I'm sure we'll learn a lot, but okay. These editorial classes and you will forever be eternal. Yay! I like the word eternal. I should give it again, I think. Very nice. After completing my exam, I took a sigh of relief. Very nice, Nishita. I try my best to adhere vocab. Adhere to, okay? Adhere के साथ हमेशा आप कौन सा, ये एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ आप क्या लगाते हो? To लगाते हो. Infinitive form में हमेशा होता है, right? So adhere to someone's wishes, okay? Adhere to. Now I am in torpor, feeling, feeling like I want to do nothing. Just want to take a sigh of relief. Okay, just want to take a sigh of relief. Very nice, Nishita. After completing 10th boards, I took sigh of relief. Very nice, Lakshmi. Good job. The eternal love of Romeo and Juliet makes me believe in love stronger than ever. Manas, you should then really read the play once again because it is definitely not eternal. And that should not make you believe in love. Here in Ranja should make you believe in love, not Romeo and Juliet. Uh, but both are not eternal. In both the cases, love is not eternal. So, love is not eternal in that case. The conclusion becomes, but theek hai, Manas, brilliant sentence. I try my best to adhere by all the advices you give during the class. To, adhere to all the advice, not advices, advice you give during the class, okay? Because advice is considered uncountable noun. So जैसे information को informations नहीं कर सकते, same goes with advices नहीं कर सकते हैं, advises हो सकता है, right? Advise
Advice is the noun form, which is uncountable. Okay, it is considered uncountable. That means you do not use s or es form. S या es form नहीं use करते हैं. On the other hand, you have the verb advise, जिसका आप advises भी यूज कर सकते हैं, आप advising भी यूज कर सकते हैं, advised भी यूज कर सकते हैं, but these are talking about the time. ठीक है, ये time बताता है, इसलिए verb है. And remember, verb वाले में s यूज होता है, verb वाले में s यूज होता है, एंड नाउन वाले में c यूज होता है. ओके, सो बोथ इन बोथ केसेस यू डू नॉट पुट s or es to make it plural. Okay, all right. I am adhering to my English. I am adhere that my English shall improve after taking your class. Uh, I'm adhering to the fact that my English will improve after taking your class. It will, Vaishnavi. It will. Okay. And Hanaya, good job. Good statement altogether. Whenever I'm in complacence and suddenly I look at Alpesh and Ishant, then I realize that now I also have to work. I also have to do hard work. Very nice. Very nice. Good job, Nishka. Good job. Proud of you. Um, Kindly adhere to the dress code. Yes, Manas. Very good sentence. Mm. The eternal pleasure of getting marks doesn't let me take a sigh of relief. Very nice, Lakshmi. Good job. Vocabulary together with editorial explanation and a pinch of fun with splash of corrections in sentences makes these sessions exclusive. Alpesh, fire. Very nice, Alpesh. Good job. It was Akarshan, it was frightening what other people were saying, that she was going to eternal hell just because of who she was. It was frightening. Good job, Akarshan. Recombinant is very important processing. Nishita, very smart you played. Okay. You have to make a sentence with recombinant, so you just made it as an important process. Very nice. I adhere in karma. I adhere to karma. Okay, I adhere to karma, and A will not be capital because adhere is a verb. यहाँ पे देखो verb है. Only if it is a noun and only if it is a proper noun, then you will write it in capital in the middle of the sentence. Otherwise, not capital. The scientists used recombinant DNA technology to create a new breed of vampire. Very nice, Manas. Good job. Such an extended period of torpor is close to a state of hibernation not known among other birds. Good job, Hivan. Good job. They were star-crossed lovers. Who were star-crossed lovers? The scientists used recombinant. Okay. The vampires were star-crossed lovers. Very nice. I am in complacence eating food of my mom's hand after a long time. I am in complacence after eating food prepared by my mom in ages. Aditya, no one in the world in this world is eternal. Very nice. I always get into poor when it comes to do homework. Very nice, Lakshmi. United must United must throw off their torpor before Liverpool arrives on Sunday. Very nice, Akarshan. Good job. Uh, Indian TV series are going on eternally. Okay, going on eternally. Very nice, Vaishnavi, and that's a good remark. Whenever I get good marks, okay. All right. So these were the words. Let's get started with the editorial. Before we get started with the editorial analysis,
this is the offer that you get फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है अभी, जिसमें आपको प्लस और आइकॉनिक बैच में अगर आप प्लस के 6 मंथ सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है साथ में, बिल्कुल फ्री, बिकॉज अब 8 महीने से भी कम टाइम बच गया है, एंड दिस वुड बी द एप्ट पैकेज फॉर यू. 33,440 में मिल रहा है, एंड you're saving 11,843. Same goes for 12 months. You are just getting it for 45,760 by using my code. अगर आप मेरा code use करते हैं, which is given over here, but I'm still writing it for no apparent reason. Vaishnavi 10 है मेरा code. अगर आप use करेंगे मेरे code को and subscribe करेंगे, कोई भी CLAT subscription को आप avail करते हैं, तो you will get flat 20% off. And this offer is only valid till May 13th. Okay. अब क्लैट के प्रिंटेड मॉक टेस्ट आ गए हैं, जिसमें आपको 10 सेक्शनल मॉक्स मिलेंगे, 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, एंड दिस विल बी डिलीवर्ड राइट टू योर डोर स्टेप. अवेलेबल, ये किसके किसके लिए अवेलेबल है? आइकॉनिक और 9 मंथ्स एंड अबव सब्सक्रिप्शन प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा क्लैट मॉक टेस्ट प्रिंटेड. अब SLAT 2023 मॉक टेस्ट सीरीज आ गया है, जिसमें आपको 12 कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, एंड दिस इज अवेलेबल एट 665 ओनली इफ यू यूज माय कोड Vaishnavi 10, दैट इज, तो आपको 665 में यूज मिल जाएगा. दिस इज योर मे मंथ का कैलेंडर. आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर, अगर आपने नहीं अपीयर किया 7th May वाला क्लैट फ्री मॉक में, तो मेक श्योर दैट यू आर अपीयरिंग फॉर ऑल द अदर्स, बिकॉज एक मॉक पर वीक करने का टाइम आ गया है, राइट? 1 मॉक पर वीक करने का टाइम आ गया है, राइट? सो मेक श्योर you're taking all the mocks that are available for you. द वॉरियर्स एक ऐसा बैच है जो ड्रॉपर्स बैच है, लेकिन क्लैट 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए, बस ड्रॉपर्स बैच नहीं, कोई भी क्लैट 2024 के एस्पिरेंट्स कैन enroll in this batch, and if you use my code Vaishnavi 10 to enroll in this batch, you will get flat 20% off. I am taking English language in this batch, so do enroll by using my code. Crack CUET PG Law DULLB in 30 days, एक intensive course है for DULLB, and this started from 27th of April. All right. Let's get started with the editorial. Everyone keep your highlighters out, highlighters and markers out, everyone. Let's get started. Of hope and vigilance. Of hope and vigilance is the title. WHO's announcement gives hope, but there is a message of caution. Okay, so basically जो title है and जो conclusion है, both are almost the same, because WHO का announcement हमें पूरा पता चल जा रहा है passage. This passage you get to know just by reading the conclusion. किसके बारे में? कि WHO कुछ announcement किया है जिसकी वजह से hope आ रहा है, बट देयर इज अ मैसेज ऑफ कॉशन एज वेल. और अगर आप क्विकली अगर आप देखोगे एक बार पैसेज को एक झलक में देखोगे, तो आपको बहुत सारे जगह कोविड 19 WHO कोविड 19, सो आपको बहुत जगह दिख जा रहा है. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट WHO किसके बारे में अनाउंसमेंट किया है कोविड 19 के बारे में, विच इज अ पॉजिटिव अनाउंसमेंट जिसकी वजह से हमें होप मिल रहा है. बट देयर इज ऑल्सो मैसेज ऑफ कॉशन, सावधानी बरतने की भी जरूरत है. ओके, दिस बिकम्स द conclusion, right? ये हमारा conclusion हो जाता है. The WHO announcement gives hope, but there's a message of caution. Now इसी से हम यही 2 लाइन से हम टोन भी पता कर सकते हैं इस पूरे पैसेज का. टोन कैसे पता करेंगे? इसका टोन कैसे पता चल रहा है हमें? 2 टोन हमें डेफिनेटली उभर के दिख रही है, hope and vigilance, hope and caution, right? So the author is, this passage is either optimistic, okay, either optimistic because it is hopeful, or it is cautionary. Okay, these are the 2 editorial tones that we can figure it out from here itself. अब हम बढ़ते हैं अपने main idea की तरफ, बढ़ते हैं passage की तरफ. Okay. The world's lived experience with pandemic has conferred it with the certitude that epidemics wane to die down or transform into seasonal outbreaks. COVID-19 is no exception. So this becomes the main idea कि जो
कलेक्टिव लिव्ड एक्सपीरियंस है लोगों का पैंडेमिक का, उससे हमें इतना तो पता चल गया है कि uh, has conferred it with the certitude that epidemics wane to die down, और सारे के सारे epidemics, जो भी epidemics आए हैं आज तक, वो सारे at certain time point of time क्या होते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, right? और transform into seasonal outbreak, या तो मर जाते हैं या तो खत्म हो जाते हैं या तो seasonal outbreak में convert हो जाते हैं, जैसे influenza हो गया, right? So COVID-19, the author यहाँ पर semicolon के बाद क्या बोला, COVID-19 is no exception, मतलब कोविड 19 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, मतलब कोविड 19 के साथ भी यही हो रहा है, या तो वो खत्म हो रहा है या तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू सीजनल आउटब्रेक. ओके, सो दिस इज द मेन आइडिया. अब देखो, the World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus last week declared, on the basis of advice from the emergency committee comprising independent experts, that the COVID-19 pandemic has no longer a public health emergency. Okay, so अब इसी के बारे में एक्सपैंड कर रहा है कि WHO ने क्या किया है. दीज आर ऑल डिटेल्स. WHO के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रॉस, उन्होंने क्या बोला है लास्ट वीक कि जिस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस फ्रॉम इमरजेंसी कमिटी में से जो एडवाइस मिला, उसके बेसिस पे वो क्या कह रहे हैं कि कोविड 19 पैंडेमिक जो है अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहा ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. ओके, इंटरनेशनल कंसर्न के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहा. आफ्टर ओवर 3 years ही वॉज रीडिंग डाउन an emergency that he first announced on January 30th 2020. इन्होंने ही अनाउंस किया था जनवरी 30th को 2020 में, जिसकी वजह से ये अनाउंस किया था कि there is a pandemic and all that, forced by rapidly spreading infection that moved from China to 20 other nations across the world. तो नथिंग दैट यू हैव टू पे क्लोज अटेंशन टू, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पर डिस्कस हुआ है, बस आपको यही बताया कि इन्होंने ही अनाउंस किया था, और अब सिचुएशंस डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट ही हैड अनाउंस्ड ऑन जनवरी 30th 2020. तो जो स्किम थ्रू दीज थिंग्स, ओके, जितने भी लाइट ब्लू में है, यू आर सपोज टू स्किम थ्रू ऑल दीज थिंग्स. डॉक्टर टेड्रोस notably invoked hope when he declared that COVID-19 was over as a global health emergency, but followed it up with a rider. Okay, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक colon दिख रहा है, right? You can see, I hope everyone can see a colon, that this is the rider. Okay, ये बताता है कि यही है rider. Okay, this is the rider. So what is the rider? It did not mean COVID-19 was no longer a global health थ्रेट. ओके, तो इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि कोविड 19 एक इंटरनेशनल कंसर्न के लिए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहा, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी ऐड किया है, कंडीशन भी ऐड किया है कि इसका मतलब ये नहीं कि ग्लोबल हेल्थ के लिए थ्रेट नहीं है अभी तक कोविड. ओके, इमरजेंसी सिचुएशन को इन्होंने कह दिया कि इट इज नो लॉन्गर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, बट डॉक्टर टेड्रोस ने ऐसा नहीं कहा है कि अब इससे कोई खतरा ही नहीं है. ओके, ऐसा भी नहीं कहा है. ओके, over the month leading up to the announcement, various experts with WHO were laying the grounds, urging that it was time that COVID-19 to treat COVID-19 quite like seasonal influenzas. तो बहुत टाइम से बहुत सारे, अगेन नथिंग इम्पोर्टेंट, बहुत लोगों ने कहा था कि अब इसको हटा देना चाहिए ग्लोबल इमरजेंसी से और इसको सीजनल इन्फ्लुएंजा जैसा ट्रीट करना चाहिए. बहुत टाइम से बात हो रही है, इन WHO एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं. For a world fatigued by great loss, human and otherwise, caused by the COVID pandemic and exhaustively on ground, the DG announcements brought a collective sigh of relief. So basically, ये वाला line थोड़ा different है because the author is using over here, he's giving sort of opinions. Okay, ये बस एक opinion, general opinion है कि लोगों को बहुत राहत की सांस मिली after going through so much of loss. Okay, so this news comes as a sigh of relief, एक राहत की सांस जैसा ये न्यूज आया है. Moving on to the final paragraph of this editorial. Okay,
However, the task, अब यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन से शुरू कर रहा है ऑथर की, मतलब एक साई ऑफ रिलीफ तो है, ओके, लेकिन the task now for WHO and nations is to ensure that this announcement is not selectively received to prevent the world from slipping into a torpor of common complacence, okay. तो basically अब क्या बोल रहा है ऑथर की, डब्ल्यूएचओ का अब क्या टास्क बन जा रहा है, अब ये अनाउंसमेंट हो गया, अब डब्ल्यूएचओ का टास्क क्या है कि वो ये पूरे अनाउंसमेंट को कैसे ऐसा इंश्योर करे कि ये सिलेक्टिवली नहीं रिसीव हो रहा है, मतलब जितना सुनना चाहते हैं लोग बस उतना ही नहीं सुन के छोड़ दे रहे हैं, और लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए इतने ज्यादा कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कि छोड़ दे रहे हैं कि अब सब कुछ सही हो गया, ओके। सो ऐसा भी नहीं सिचुएशन आना चाहिए, ओके। For COVID is not an over multiple variant, and subvariant continues to emerge regularly, and it has not yet settled into a seasonal pattern that one can read or prevent, okay. So अभी तक क्यों ऐसा ऑथर बोल रहा है कि कॉशन बरतना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी डब्ल्यूएचओ को भी अपने अनाउंसमेंट्स में, क्योंकि ताकि लोग सिलेक्टिवली इसको ना सुने और ये ना सोच ले कि कोविड अब खत्म हो गया और इन्फ्लुएंजा बन गया, ओके। क्योंकि अभी तक ऐसा, अभी भी उसके मल्टीपल वेरिएंट्स आ रहे हैं और अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सीजनल पैटर्न की तरह अभी तक नहीं बन गया है जिसको लोग पढ़ भी सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सो इट इज स्टिल नॉट एट दैट स्टेज, okay. That's why at any point of time, it is possible that a new variant or a recombinant may lead to rapid transmission and cause several diseases, resulting in hospitalization and even higher mortality rates. तो कोई भी टाइम ऐसा आ सकता है जब एक नया वेरिएंट आ जाए मार्केट में एक नया वेरिएंट आ जाए एंड उसकी वजह से फिर से शुरू हो जाए ये हॉस्पिटलाइजेशन और ये ट्रीटिंग इट लाइक अ सिवियर डिजीज, और बहुत सारे मोर्टालिटी रेट भी बढ़ जाए, लोग जल्दी मरने लगे। सो all these situations are still possible, that's what the author is saying, कि अभी भी हो सकता है, कभी भी मल्टीप्लाई कर सकता है, नया वेरिएंट बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी कोविड इज नॉट स्टेबल लाइक इन्फ्लुएंजा। As global health experts continue to insist, global health experts abhi tak kya insist kar rahe, again there is a colon, so you understand what they are insisting. For health systems, external vigilance is essential to maintain a level of care and periodic, okay, so this is important, this becomes important for health system. uh, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको, डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आना रहता तो इस लाइन से आ सकता था, ओके, बिकॉज ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि फॉर हेल्थ सिस्टम्स विजिलेंस जरूरी है, हमेशा सावधानी बरतने की जरूरत है और पीरियोडिकली टेस्ट कराना भी जरूरत है, ओके, ताकि इसको एपिडेमिक सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके, ओके। द इम्प्रेसिव नेटवर्क ऑफ one second, the impressive network of INSACOG laboratories capable of genetic sequencing, अब ये एक आपको एग्जाम्पल दे रहा है इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, जेनेटिक सीक्वेंसिंग एंड इवन रूटीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप ड्यूरिंग द कोविड इयर्स मस्ट बी यूटिलाइज्ड वेल। अब ऑथर अपनी साइड से क्या सोल्यूशन दे रहा है कि जितने भी इंसाकॉग लेबोरेटरीज ने जो इम्प्रेसिव काम किया था और जेनेटिक सीक्वेंसिंग में, और इवन द रूटीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड हुआ था कोविड के प्रिकॉशन के लिए, इन सबको अभी भी यूटिलाइज करना चाहिए अच्छे से, ओके। इट इज इंपॉर्टेंट, the author is saying it is important not to take, okay, author is saying it is important not to take the foot off the pedal in terms of research and development into vaccine platform, drug delivery system, antivirals and antibiotics, okay. So basically author बोल रहा है कि अभी भी इन सब चीजों से हमें प्रेशर नहीं हटाना है, हमें अभी भी आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। सो वी हैव टू बी ever ready, okay. So it is saying research और development में ऐसी होने चाहिए वैक्सीन्स और एंटीवायरल्स एंटीबायोटिक्स में ऐसी ही इम्प्रूवमेंट्स होते रहने चाहिए, ठीक है, हम इन पे काम करते रहने चाहिए। This will enable nation to be prepared and on guard, not just for COVID-19 but also for other emerging infections. तो बस ये आपको, ये हमारी गवर्नमेंट को COVID-19 के लिए नहीं प्रिपेयर करेगा, बट इट विल, गवर्नमेंट को मैं कह रही हूँ, कोई भी नेशन को बस COVID-19 के लिए नहीं प्रिपेयर करेगा, इट विल प्रिपेयर देम फॉर other emerging infections as well. At a personal level, individuals will benefit from following the hygiene and precaution that
became a habit during the COVID years, particularly adhering to vaccination schedule and following hand hygiene and masking under certain circumstances. So, यहाँ से it is the author's conclusion. Basically, the author is saying कि फाइनली हमें जो हम करते आए हैं कोविड के लिए जो हम सावधानी बरत रहे थे बरत बरत जो हम सावधानी ले रहे थे वही सावधानी हमें अभी भी लेनी चाहिए. दैट इज मास्किंग बहुत जरूरी है. वैक्सीनेशन के शेड्यूल्स वैसे ही होना चाहिए. हमें अडियर करना चाहिए वैक्सीनेशन के शेड्यूल से. Same good habits that should be carried on for now. Okay, so this was the passage. So the tone हमने already we have discussed. It can be cautionary. Majority cautionary ही tone है. Cautionary tone would be the correct one because the author mostly is talking about कि क्या क्या हमें preventive measures लेने चाहिए, है ना. Preventive measures हमें क्या लेनी चाहिए, government को क्या लेनी चाहिए, nations को क्या लेनी चाहिए, and laboratories को क्या करनी चाहिए, health experts को क्या करना चाहिए. All these are cautionary tales that the author is giving. ठीक है, तो that's why the tone would be cautionary. All right, so this was the editorial for today, and we will wind up the show now. Thank you, boys and girls, for attending the session. I will see you again tomorrow with another editorial analysis. And don't forget to watch the shorts and comment on the shorts. And don't forget to attend the special session in the evening at 6. All right, sayonara, bye bye, adios. मैम इंफॉर्मेटिव नहीं होगा क्या? नहीं निशिता, बिकॉज अगेन द ऑथर इज कॉमेंटिंग. ओके, इंफॉर्मेटिव में कंप्लीटली ऑथर इज नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन फ्रॉम हिज साइड. ठीक है, ऑथर अपने साइड से कोई ओपिनियन नहीं देता है. ओके, ऑल राइट, सो दैट्स व्हाई नॉट इंफॉर्मेटिव.